Even as India strives to make a mark of its own in the 21st century, there continues to exist a vast population of rural poor looking for opportunities to awaken the intrinsic aspirations and abilities within them. Uttar Pradesh, the most populous state of the country, accounts for 20% of the poor in India. Nearly half of its 175 million people live below the poverty line, over 80% in the rural areas. Health and education indicators in the region are very low. The social order is deeply hierarchical, and caste and gender-based exclusions are all pervasive. In this backdrop, the Rajiv Gandhi Mahila Vikas Pariyojana, a flagship poverty reduction program of the Rajiv Gandhi Charitable Trust, started working for the empowerment of the rural poor by organizing them into self-sustaining institutions. बहुत गरीब होते हैं, उनके पास कुछ पैसा नहीं होता है, कुछ कमाने का जरिया नहीं होता है, झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे लोग को एकदम गरीब कहते हैं. Over the last few years, the program has impacted the lives of more than 1 million people across 20 backward districts of Uttar Pradesh. We are working with a strong belief that the poor have innate abilities to overcome poverty. What they require is the sensitive support and the enabling environment. The RGMVP is providing that sensitive support and organizing the poor to unleash their energy. And in the process of organizing them, the poor are building their own institutions to discuss various issues which are concerned to their lives. It's education, healthcare, access to various rights and entitlements. So it provides a platform for the poor and gives a voice for them to access various services and participate in all the developmental programs. हम लोग ये योजना बनाया है, ये काम कर रहा है. इससे क्या होता है बताइए? एक तो है सभी बहनें मिलके काम कर रहे, सभी बहनें आगे. RGMVP started by motivating poor women in every village to form their own community institutions, beginning with a self-help group. Self-help groups usually comprise between 10 to 20 women who have come together with a willingness to help one another and the community at large. RGMVP links each group to rural banks, which allow them to access credit easily without any collateral. हमें समूह से जुड़ के बहुत फायदा है, बहुत महत्व है. यहाँ तक कि घर का तो जो हमारे घर में आमदनी का जरिया हो गया, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा, किसी घर नहीं जाना पड़ता. ये तो हमारी समस्या दूर हो गई और हमारे घर आमदनी भी हो गई. 3 years ago, Rakia Bano lost her husband in an accident, leaving behind a hapless family with no source of income. A self-help group from her village immediately took her into their fold, introducing to her the benefits of livelihood enhancement through financial inclusion. जब हमारा समूह नहीं था, तब हम लोग गरीब थे, मगर जैसे कोई बिजनेस करना चाहते सोचते थे, मगर पैसे नहीं थे, इसलिए हम लोग कर नहीं पाते थे. ये जब समूह बना हमारा, तो समूह से थोड़ा थोड़ा करके पहले हम लोगों ने ऐसा बकड़ी उकड़ी लिया, थोड़ी थोड़ी पूंजी किया. जब हमारे पूंजी थोड़ा बड़ी हुई तो थोड़ा हमारा दिमाग भी बढ़ा, तो हम लोग ये सोचा कि चलो 500 मुर्गी हम लोग खुद डालें, 3 बहनें मिलकर 10,000 रुपया लेके हम इसको बनाया. ये थोड़ा थोड़ा करके अपने अपने पास छाया, फिर उसके बाद में पैसा लगा के बच्चा लिया. जब से हमने समूह ये रोजगार धंधा इसमें से किया है और ये ग्राम संगठन बना, जब से हमने अपने 2 लड़कियों को पढ़ाया, तो हमें ये समूह से बहुत चीज़ ग्राम संगठन बहुत सीख मिला कि एक जितने करियो, जब पूंजी लगाए के बाद थोड़ा आगे बढ़ाओ, कोशिश करिए तो आगे बढ़िए जरूर. These community institutions of the poor act as a development delivery system, enabling community development from a bottoms-up approach, while also channelizing the top-down development interventions of the state. Today, the social mobilization process under RGMVP is led by women from the community itself. Identified community resource persons from the program villages who have experienced transformation in their own lives are volunteering to motivate and mobilize the poor in the remotest areas of Uttar Pradesh to organize them into groups. This community-driven approach is generating the much-needed social capital at a rapid rate and on a large scale. देखो अकेला पत्थर था तब ये कोनो पहचान नहीं रही. जब सभी पत्थर एक हो गए, सब सारे पत्थर एक हो गए, तब ये चट्टान के रूप ले ले. अब इनके पहचान हो गई कि नहीं बे?
हमें भी बहुत बदलाव है। जो मैं घर में रहती थी बहुत डरती थी और घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज मैं यहाँ तक कि अपने गांव में भी सभी बहनों को तो प्रेरणा दे ही रही हूँ, अपने ब्लॉक में भी दे रही हूँ। आज मैं ब्लॉक संगठन के में अध्यक्ष बन गई तो बैंक का आना जाना तो पड़ने लगा। वहाँ आने जाने से हमारी जो झिझक है वो दूर हो गई, हमारा डर जो है दूर हो गया। और अपने ब्लॉक से झांसी, बबीना, ललितपुर ब्लॉक, यह हमारे रायबरेली जिला में लालगंज ब्लॉक, यहाँ कुल जाके ही बहनों को प्रेरणा देती हूँ समूह के, कि समूह क्या है, क्यों है। समूह से जुड़कर गरीब लोग अपनी समस्या को कैसे समाधान करते हैं और उनके जीवन में कैसे बदलाव आ जाता है। At the next stage of the initiative, 10 to 20 self-help groups are federated into a village organization. 20 to 30 village organizations are further federated into a block organization. These forums provide the poor an enabling platform to actively participate in all development initiatives. They also provide a collective voice and strength to fight against injustice and enables them to access their entitlements. 20 years ago, a wealthy neighbor usurped Gudda Devi's family home. Neither the local police nor the court of law was able to provide her any reprieve. Gudda Devi approached her village organization. पुलिस आई, थाना आवा, फिर एक बार मुकदमा दायर करे। मुकदमा में जितना वकील लगाई सब वकील रुपया खा लिए, घूस भर दिए, हमारे कहते वो बन करे। फिर सोचन कि हमारा समूह बना है और साल खान भरान बने और ग्राम संगठन हो गया, सब हो गया। तम कहीं चला सब चीज है कि जान हमारे बहने मदद कर दिए। तो बहनों से राय दी ना, तो बहने कहीं कि नहीं जाना है, हम सब लड़ बैसा थे। सब बहनें इकट्ठा होके आई तो हमारा जमीन रुकी रही, सब दिन भरे मकाई के, शाम के अपने घर लौट के गए दिवाई के। तब now that world becomes very wide. Now they are thinking about their village, they are thinking about their country, they are thinking about others, they are thinking about development, and women becomes the entry point. She becomes an entry point for the development of the family. Since its inception, RGMVP has been encouraging women and young girls to explore income-generating opportunities in the non-agricultural sector. Through its training centers, the organization has helped hundreds of women to learn skills which they can use to enhance their earnings and better the quality of their lives. Under the Livelihoods Enhancement Program, the RGMVP is promoting best practices for dairy management, sustainable agricultural techniques, and new methods for crop intensification like SRI and SWI. With the facilitating support from RGMVP, community institutions have taken up many development initiatives on their own. Community learning centers set up and managed by the village organizations are a case in point. हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत कमजोर थी। जब हम लोगों को ग्राम संगठन के माध्यम से ट्रेनिंग मिली तो हमको ये नॉलेज हुआ कि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हमको जो है संतुष्टि मिलेगी। इसलिए हम अपने ग्राम संगठन के माध्यम से आज इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं हमारे बच्चों के भविष्य के उजाला के लिए। The state of Uttar Pradesh has some of the lowest human development indices in the country. RGMVP's community-based healthcare program is specifically aimed at reducing the infant and maternal mortality rate and incidences of polio by spreading awareness. Voluntary community health activists or Swasthya Sakhis are trained to provide basic knowledge on reproductive health and sanitation with special emphasis on prevention. हम प्रसव के लिए तैयारी करें, हम 5 सफाइयों का ध्यान रखना है। The community institutions act as information management systems as the Swasthya Sakhis link the village women to various state and non-state healthcare programs and the frontline healthcare workers like the Ashas, ANMs and AWWs. The Swasthya Sakhis also propagate best practices for mother and child care. आयरन की 100 गोलियां खाएं, उनको टीके 2 टीके भी लगते हैं, स्वास्थ्य जांचें होती हैं, ये सब हम उनको भी सलाह देते हैं। उसके बाद में हम खतरे के निशान देखें कि अगर गर्भवती मेरी बहन है तो उसके खतरे के निशान क्या क्या है।
जो हम सर्वे करने निकले दीदी, तो हमारे गांव का 23 लाख रुपए तो खर्च हुए दवा में, और 5 साल के पीछे के रिकॉर्ड बता रही हूँ मैं आपको। और उसमें दीदी 4 महिलाओं की मौत हो चुकी थी, 9 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। और जब से हम स्वास्थ्य सखी यहाँ पे हम चुने गए हैं, 1 साल में हमने 53 बहनों का जुड़ाव आशा बहू से करवाए, और जिसमें 40 बहनों की हमने परसों अस्पताल में करवाए। और इस तरह से दीदी बहुत जो साफ सफाई है, खान पान के ऊपर हम जाते हैं, अपनी बहनों को जांच करते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं क्या खून कमियां क्या कर रही हैं क्या नहीं। A recent study conducted in program villages to assess the impact of the Swasthya Sakhi initiative showed that there is significant behavioral change with regard to healthcare of women and children, along with many other meaningful changes in the existing social system. हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, इसमें हमें बहुत दिक्कत आती थी। अब हमको ये सब कोई रोक टोक नहीं है, हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और अच्छा से मीटिंग भी कर रहे हैं। हमारे हिंदू मुसलमान में जो है ये भेदभाव बिल्कुल नहीं, ये सब हट गया है। In the remote villages of the UP, this program is bringing a silent revolution, many social changes. For example, caste, creed, religion. By sitting together, they discuss their problems, they share their pain, they share their happiness. You know, in this process, all these differences are silently, they are withering away. Today, RGMVP is one of the largest and fastest growing social mobilization programs in northern India. With its organizational activities and the unfettered zest of the women, RGMVP seeks to reach out to many more and let their collective voices resound across the country. ये हमारा सपना है कि हमारे जैसे कोई भी बहन न राजा, जैसे हम विकास किए हैं, आज हम आगे बढ़े हों, ऐसे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की बहन आगे बढ़ें और अपनी गरीबी दूर करें। ये हमारा सपना और हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे।